Hello everyone, this is CA Samiksha Sethia. I hope you all are studying really well for the upcoming examinations. As you can see in this video, I am back with the paper analysis of your CA Inter Economics for the January 21 exams. गाइज अगर आप लोग May 21 या फिर उसके बाद के कोई भी एग्जाम में बैठने वाले हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिव्यू द पास्ट पेपर्स. किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड वेदर यू आर एबल टू आंसर देम और नॉट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट पास्ट 3 या 4 टर्म्स के पेपर आपको ज़रूर से देख के जाना चाहिए. इससे you will get familiar with the paper pattern also and also you will be able to assess yourself जो आपने preparation की है, whether you are able to answer the questions with the help of that or not. Already मैंने November 20 पेपर का एनालिसिस कर दिया है. उसकी वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मैं उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के एंड में भी मैं उस वीडियो का लिंक अटैच कर दूंगी सो दैट यू कैन गो एंड वॉच दैट आफ्टर दिस पेपर. Also, I have uploaded the paper analysis of CA Inter Audit for November 20, January 21 and other examination terms पहले के भी. You can also go and watch them. Just let me tell you that the institute, one more small update, that the institute has released new study materials for all its subjects for the May 21 examination onwards. तो अगर आप May 21 एग्ज़ाम या उसके बाद में CA इंटर एग्ज़ाम देने वाले हैं गाइस, तो आपको इंस्टीट्यूट का नया स्टडी मटेरियल ज़रूर से रेफ़र करना है. कुछ कॉन्सेप्ट्स उन्होंने नए ऐड किए हैं, एग्जाम्पल्स नए ऐड किए हैं. CA इंटर ऑडिट को लेके जो भी चेंजेस हैं इन द न्यू स्टडी मटेरियल, उसकी ऑलरेडी एक वीडियो सीरीज़ हमारे चैनल पे अपलोडेड है. यू कैन गो एंड वॉच दैट लेट्स अपडेट ऑडिट सीरीज़. सिमिलरली आई एम गोइंग टू डू द लेट्स अपडेट इकोनॉमिक्स सीरीज़ वेरी सून, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स के नए स्टडी मटेरियल में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स नए ऐड हुए हैं वो सारे भी हम लोग कवर कर लेंगे. चलिए विदाउट एनी अडो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द रिव्यू ऑफ योर Jan 21 economics for finance part. As always, I have done a detailed analysis chapter wise and topic wise, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए. तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पूरी समरी जो है ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अटैच कर दूंगी. आप अगर ज़रूरत पड़े आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. मैं अभी आपको दिखाना चाहती हूँ गाइज कि देखो आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर एज ऑलवेज द इंस्टीट्यूट हैज़ टच्ड, बिकॉज इकोनॉमिक्स पेपर में आपके 2, 3, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. तो इंस्टीट्यूट हर एक चैप्टर को टच करने की कोशिश करता है. सिमिलरली द Jan 21 पेपर वॉज वेरी इजी पेपर एंड इट वॉज अ वेरी वेल बैलेंस्ड पेपर एज ऑलवेज. तो इकोनॉमिक्स जो है वो एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है. मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को कहती आई हूँ. इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस विथ यू दैट all those students, almost all those students who have cleared CA Inter from our SJC Institute, and even those students who could not clear both the groups, more than 80% I would say they have scored exemption. जिन्होंने अपने मार्क्स शेयर किए ऑफ कोर्स हमारे साथ, उस डेटा से हमें ये पता चला most of the students are able to score exemption in FM and economics paper. So guys, this is a very important paper in your group 2. It may help you balance out the other papers. चलो अभी मैं शुरू करती हूँ with the review. ये जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं डिटेल्ड एनालिसिस वाला, ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी इसका लिंक, so that you can go and download it from there. Okay, now let's start with the review. Question wise डिटेल्ड हम रिव्यू करने वाले हैं. पहला क्वेश्चन देखो प्रैक्टिकल है. गिवन द फॉलोइंग इक्वेशंस, मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारा होमवर्क करके रखा है सो दैट द वीडियो कैन बी एज शॉर्ट एंड टू द पॉइंट एज पॉसिबल. तो मैंने जो भी कीवर्ड्स हैं उनको ऑरेंज में हाईलाइट कर दिया बॉक्स में, और सोल्यूशन का भी कुछ हिंट्स मैंने यहाँ पर दे दिया. इसका भी जो डॉक्यूमेंट का लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकें. ऑल राइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन द फॉलोइंग इक्वेशंस, C is equal to 200 plus 0.8y and I is equal to 1200. You have to calculate the equilibrium level of national income and the consumption expenditure at the equilibrium level of national income. So guys, this is from your Keynesian theory 2 sector model पूछा गया है. Y is equal to C plus I. So you just have to substitute the values of C and I and then you calculate the equilibrium level of national income, which is nothing but your Y. Once you calculate Y, आप Y को यहाँ पर substitute कर देंगे in the consumption function
function that has been given, and you will get the consumption expenditure at the equilibrium level of national income. All right. Next question is from your exchange rate chapter. Distinguish between direct quote and indirect quote with reference to express nominal exchange rate between two countries. तो इसका कोई खास यहाँ पर रेफरेंस नहीं है, मतलब नहीं है, आपको बस डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट को डिफरेंशिएट करना है. सो व्हाट इज डायरेक्ट कोट गाइस? डायरेक्ट कोट इज व्हेन the number of units of home currency are expressed in terms of foreign currency. So if I talk of Indian rupee, India के लिए direct quote क्या होगा? Rupee per dollar, rupee per pound. What is indirect quote on the other hand? Indirect quote को हम American exchange quote भी बोलते हैं और direct quote को हम European exchange कोटेशन भी बोलते हैं, एक्सचेंज रेट कोटेशन भी बोलते हैं. इनडायरेक्ट कोट मींस द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ 1 यूनिट ऑफ द लोकल करेंसी, यानी कि डॉलर पर रुपी या फिर पाउंड पर रुपी, येन पर रुपी. दीज आर इनडायरेक्ट कोट्स फॉर इंडिया. सो हियर यू राइट द डेफिनेशन, प्लस यू ऑल्सो गिव एग्जाम्पल. और आप ये भी लिख सकते हैं, इसको अमेरिकन एक्सचेंज कोड कहते हैं, इसको यूरोपियन एक्सचेंज कोड कहते हैं. ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम योर मनी सप्लाई चैप्टर. कंप्यूट M2 सप्लाई ऑफ मनी फ्रॉम द फॉलोइंग RBI डेटा. M2 बहुत सिंपल है. M2 क्या होता है? इट इज M1 प्लस योर सेविंग डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक. ठीक है, सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक. M1 क्या होता है? M1 के अंदर हम करेंसी विद पब्लिक को ऐड करते हैं, देन वी ऐड द डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स एंड वी ऑल्सो ऐड द अदर डिपॉजिट्स विद RBI. इससे निकल जाएगा हमारा M1. तो M1 के लिए हम ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, एंड फाइनली M1 के साथ यू ऐड द सेविंग डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एंड देन यू गेट द M2. So this is also to be added. यहाँ पर net time deposits with banking system दिया है, ये M3 का पार्ट होता है. So this is not to be added. This is not to be added. Okay. Next question देखो, explain the transactions motive for holding cash. कौन से चैप्टर से है मैम? मनी डिमांड चैप्टर से है. लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी इफ यू रिमेंबर. ठीक है, तो वहां पर एक ट्रांजैक्शन मोटिव फॉर होल्डिंग कैश था which says that since there is a time gap between the receipt of money and the expenses that are to be made, people are required to hold certain amount of money in the form of cash for the transaction purpose. इसको दो पार्ट में भी डिवाइड किया गया था. इफ यू रिमेंबर, बिजनेस मोटिव है, एक पर्सनल मोटिव, इनकम मोटिव है. सो फॉर individuals, that is for households and also for business houses, since there is a difference between the time when receipts are made, income is received, and the time when expenses are made, people have to hold a certain amount of money in the form of cash to spend for transactionary purposes. जॉन मायनार्ड कीन्स ने कहा कि इसका कोई रिलेशन नहीं है विद द इंटरेस्ट रेट. लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के हिसाब से ट्रांजैक्शनरी मोटिव के लिए जो मनी होल्ड करना है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इनकम. दैट मीन्स अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ योर इनकम, अ सर्टेन proportion of income is to be held in the form of cash for transactionary purposes. So that is K, proportion of income which is to be held in the form of cash, and Y is your level of income. So no relation as such with the interest rate. Interest rate is relevant for your speculative motive of holding cash. Okay, चलो अगला सवाल देखो. Calculate GNP at market price from the following data using the value added method. So there are three methods of computation of national income if you remember: value added, expenditure and income method. यहाँ पर value added method से question था which is the most easiest of the three. ठीक है, इसके अंदर हम gross value added calculate करते हैं. gross value added guys क्या होता है? It is the difference between the value of output in each sector minus the value of the intermediate consumption. तो यहाँ पर देखो, we have been given with value of output in primary sector. अच्छा, यहाँ पर एक कंफ्यूज करने के लिए एक डेटा दिया गया है, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स. गाइज आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स का यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं है. हमें वैल्यू एडेड मेथड के लिए आउटपुट की वैल्यू ऐड करनी है माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ ईच सेक्टर करना है. इससे हमें क्या मिलेगा? इससे वी विल रिसीव द GDP एट मार्केट प्राइसेस. नाउ इन व्हाट डू वी हैव टू कंप्यूट? GNP एट मार्केट प्राइस. तो डोमेस्टिक को जब नेशनल में कन्वर्ट करना होता है, डोमेस्टिक को नेशनल में, यू हैव टू फाइंड आउट नेशनल एंड यू हैव डोमेस्टिक. व्हाट डू वी डू? वी ऐड NFIA. नाउ ऐड NFIA, यहाँ पर NFIA ऑलरेडी नेगेटिव में है, दैट मीन्स नेट फैक्टर इनकम वी आर पेइंग टू अब्रॉड. तो हमें ऐड ही करना है, बट नेट इफेक्ट जो है वो माइनस में आ जाएगा बिकॉज इट्स -60 गिवन.
ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? इट इज द रेशियो of the total net demand and time liabilities which a scheduled commercial bank has to keep with the RBI. ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो इज टू बी केप्ट विथ द आरबीआई. क्या आरबीआई इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पेमेंट करेगा? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को नहीं पेमेंट करेगा. व्हाट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? इट इज द रेशियो अगेन ऑफ नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज व्हिच द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स नीड टू कीप विथ देमसेल्व्स. अगेन इसको कौन से फॉर्म में कर सकते हैं? कैश, गोल्ड एंड द सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विच हैव बीन मेंशन्ड. सीआरआर को मेंटेन किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैश विद आरबीआई. एसएलआर को बैंक्स अपने पास मेंटेन करती है इन द फॉर्म्स विच हैव बीन स्पेसिफाइड. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय क्राउडिंग आउट इन रिलेशन टू फिस्कल पॉलिसी? क्राउडिंग आउट मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग इट्स एक्सपेंडिचर बिकॉज ऑफ विच द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और द प्राइवेट एक्सपेंडिचर इज बीइंग क्राउडेड आउट. से फॉर एग्जांपल हमने क्लास में भी एग्जांपल किया था, अगर गवर्नमेंट सबको फ्री कंप्यूटर्स देने लग गई तो जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे वो आर इन्वेस्टिंग इन कंप्यूटर्स, वो मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स, उनकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी. सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज बीइंग क्राउडेड आउट. नाउ व्हेन दी गवर्नमेंट इज मेकिंग एक्सपेंडिचर, उनके पास फंड कहाँ से आ रहे हैं? उनके पास फंड आ रहे हैं, वो बोरो कर रहे हैं कहीं से, बोरो कर रहे हैं तो मनी का डिमांड बढ़ रहा है, यानी कि इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीजिंग. इफ इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीजिंग, हाउ विल प्राइवेट इन्वेस्टर्स, जिनको भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट करना है, उनके लिए कॉस्ट ऑफ मनी वुड इंक्रीज, interest payments would interest rate is rising, hence उनके लिए the cost of capital is increasing. इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विच इज इंटरेस्ट सेंसिटिव वुड फॉल. इसको हम कहते हैं दिस इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी वेर इन द गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग इट्स एक्सपेंडिचर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज compute GDP at market price and mixed income of self-employed from the data given below. So just let's have a look at the data that is given. Compensation of employees is given, depreciation is given, rent, interest and profit, इसको मिला के हम क्या कहते हैं? Operating surplus. Next we have NDP at factor cost is given, NDP at factor cost is given. We have subsidies, NFIA is given and indirect taxes is given. Now first of all we have to compute the GDP at market price. जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है कि आपको GDP at MP कंप्यूट करना है एंड यू ऑलरेडी हैव वन एग्रीगेट कैलकुलेटेड विथ यू, तो अपने को बैक कैलकुलेट करना है. मतलब हमारे पास NDP at फैक्टर कॉस्ट है, सो वी टेक NDP at फैक्टर कॉस्ट एज द बेस फिगर. नाउ यू नीड टू सी कि इससे मुझे GDP at मार्केट प्राइस निकालना है. तो मैंने जैसे क्लास में आपको सिखाया कि देखो बच्चों अल्फाबेट का डिफरेंशिएशन करो, यहाँ पर निकालना है G, यहाँ पर आपके पास है N. तो नेट में जब डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं तो मिलता है ग्रॉस, तो हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं. नाउ हियर वी हैव डी, हियर वी हैव डी, सेम है, कुछ नहीं करना है, टच भी नहीं करना है. यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट दिया है, यहाँ पर मार्केट प्राइस निकालना है. तो फैक्टर कॉस्ट में जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इसको हम ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है मार्केट प्राइस. तो इस तरह के एडजस्टमेंट करके आप निकाल सकते हैं GDP एट मार्केट प्राइस. नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. तो अगेन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये जो दिया गया है हमें, इसका एक फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर इनकम मेथड के हिसाब से कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस योर ऑपरेटिंग सरप्लस, दैट इज रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, प्लस द मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, दिस इज इक्वल टू योर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, तो अभी मुझे मिक्स्ड इनकम कैलकुलेट करने में पास बाकी सारे फिगर्स है. आई जस्ट सब्सटीट्यूट ऑल द फिगर्स अवेलेबल एंड देन आई गेट द मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. ऑल राइट, next a very interesting question is given. Due to recession in an economy, government expenditure increases by rupees 6 million. If marginal propensity to consume, that is MPC in the economy, is 0.8, you have to compute the increase in GDP. Now guys, just remember one thing, that whenever you are having GDP, it can also act as a substitute of your income, because in the national income aggregates generally income is represented by your GDP, not national income, but अगर income कहा गया है तो आप उसको GDP मान सकते हैं. Now इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था. सिमिलरली हमने एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था. व्हाट इज द मल्टीप्लायर? मल्टीप्लायर इज 1 upon 1 by 1 minus b. So 1 by 1 minus b, wherein b is your marginal propensity to consume. This b is your marginal propensity to consume.
नाउ दिस मल्टीप्लायर मतलब क्या हुआ, द चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन एक्सपेंडिचर, मतलब अगर मैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की बात करूं, सो द चेंज इन इनकम ड्यू टू द चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसको हम कहते हैं द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर. हेंस आई कैन से डेल्टा वाई बाई डेल्टा जी, दैट मीन्स द चेंज इन इनकम बाई द चेंज इन government expenditure is equal to the multiplier. I have the value of B, I have the value of delta G, change in government expenditure rupees 6 billion, and I need to calculate the increase in GTB, that means I have to calculate delta Y. आप सारे figures को substitute कर दो, you'll get the answer. Okay. Next question is describe the advantages of floating exchange rate. What is floating exchange rate? Wherein the exchange rate is market determined. There is no intervention of the central bank in determination of the exchange rate. इसके advantages क्या हैं? Since there is no intervention by the central bank, they can formulate their independent monetary policy, they can focus on formulation of monetary policy. Again, central bank को required नहीं है कोई भी foreign exchange reserves maintain करना, because they don't have to intervene as such in the market. And lastly, they can use this exchange rate as a policy tool to influence the nominal exchange rate. अगर मुझे ही डिटरमिन करना होता है एक्सचेंज रेट, हाउ विल आई यूज इट एज अ पॉलिसी टूल? बट सिंस आई कैन समटाइम्स इंटरवीन इन द मार्केट व्हेन देयर आर अनड्यू फ्लक्चुएशंस, सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस, आई कैन यूज दिस एज अ पॉलिसी टूल. दैट मीन्स द सेंट्रल बैंक कैन यूज इट एज अ पॉलिसी टूल. ओके. Next question is discuss the role of market stabilization scheme in our economy. Again, this is a monetary policy instrument. Market stabilization scheme क्या है? This is basically a memorandum of understanding between whom? Between the RBI and the government of India. And it takes place by way of sterilization. Sterilization मतलब क्या? जब बहुत ज़्यादा foreign capital inflow हो जाते हैं इकोनॉमी के अंदर, in that case what will the government of India do? They will borrow funds from the RBI. That means RBI is going to sell the government bonds ताकि जो domestic money है वो भी इनफ्लो हो इकोनॉमी के अंदर, और वो फॉरेन कैपिटल जो बहुत ज्यादा आ गया उसके इम्पैक्ट को ऑफसेट कर सके. दिस इज नोन एज द मार्केट स्टेबलाइजेशन scheme. It helps in offsetting the effect of significant foreign investment inflow in the economy. Next question देखो, describe the allocation instruments available to the government to influence resource allocation in an economy. So resource allocation is basically being done by the government. इसके लिए कौन से tools use कर सकते हैं? It can directly produce those goods which are having positive impact on the economy, direct production कर सकते हैं, or it can provide incentives to produce public goods or those goods which are essential for the welfare of the economy, or disincentivize the private investments in those sectors which are harmful for the economy. It can also take certain regulatory actions जैसे कि licensing. अगर आपको इस तरह के गुड्स प्रोड्यूस करने आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, मिनिमम वेज लेवल्स फिक्स करना. ओके, और दे कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज टूल्स इन ऑर्डर टू allocate the resources properly. Next question, we have explained the concept of money multiplier. What is money multiplier? Money multiplier is basically a ratio of the change in money supply due to a change in the monetary base. So if high powered money is increased or if high powered money is changing, what would be the impact on money supply? This is being denoted by money multiplier. Okay, M is equal to this M, small m is your money multiplier, capital M is your money supply, and this is your monetary base or the high powered money. चलो अगला सवाल, ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगाओ बिकॉज ये आपके स्टडी मटेरियल में इंक्लूडेड नहीं था, बट गाइज अगर आपके 11-12 की इकोनॉमिक्स की नॉलेज अच्छी है, आई एम श्योर यू हैव बीन एबल टू आंसर दिस. कैलकुलेट द फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो. फिस्कल डेफिसिट क्या हुआ? गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर जो है, सिंस वी आर कैलकुलेटिंग डेफिसिट तो एक्सपेंडिचर माइनस द रिसीट्स. ओके, सो टोटल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट माइनस द टोटल रिसीट्स, but receipts here excludes the borrowings, so that means only the non-debt receipts have to be included along with your revenue receipts. So revenue receipts plus your non-debt capital receipts and total expenditure यहाँ पे दिया गया है. So for calculating fiscal deficit we add this total expenditure on revenue account and capital account minus your revenue receipts minus the non-debt capital receipts. इस तरह से हमें मिल जाएगा ये फिस्कल डेफिसिट.
Now in order to calculate the primary deficit, fiscal deficit minus the interest payment that has to be made, उसको हम कहते हैं primary deficit. So in order to calculate the primary deficit, we subtract this from the fiscal deficit. So fiscal deficit minus the interest payment. Next question is describe the purposes of trade barriers in international trade. So international trade के अंदर में why are trade barriers being levied like tariffs, quotas, इस तरह के trade barriers क्यों लगाए जाते हैं? दो पर्पस होते हैं. सबसे पहले तो to promote the domestic industry or to increase or encourage the domestic industry. Second is to increase the revenue of the government. Okay. अगला सवाल है, ये भी क्वेश्चन इफ यू रिमेंबर हमने क्लास में किया. तो गाइज ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं हमने सारे के सारे अपनी क्लासेस में कवर किए थे. अगर आप हमारे स्टूडेंट रहे हैं, आई एम श्योर दैट आप ऑलमोस्ट 95% पेपर आपने आराम से आंसर कर दिया होगा. ओके, यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. यहाँ पर एक गुड एम है विच इज़ योर मोबाइल फोन, जिसकी एवरेज कॉस्ट दी गई है, प्राइस पर यूनिट फॉर डोमेस्टिक सेल्स दिया गया है, प्राइस चार्ज इन दुबई दिया गया है, एंड 3 कंट्रीज हैं, इंडिया, जापान एंड चाइना. इनका रेस्पेक्टिव एवरेज कॉस्ट ये है, प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में ये है और एक्सपोर्ट मार्केट में यानी कि आपका दुबई के अंदर प्राइस इज this. Question is very interesting. Which of the 3 exporters are engaged in anti-competitive act in the international market while pricing its export of mobile phones to Dubai? तो anti-competitive act मतलब क्या हुआ? Anti-competitive act means I am charging a price in the international market which is either lower than the price that is being charged in my domestic sales in my domestic territory or it is lower than my average cost. तो यहाँ पर अगर आप देखो इंडिया का एवरेज कॉस्ट इज 70.5, प्राइस चार्ज इज 71.9, फेयर इनफ, हायर देन द एवरेज कॉस्ट. प्राइस चार्ज इन द इंडियन मार्केट इज 71.2 and in the Dubai market it is 71.9, so higher than the domestic market, again fair enough. तो India is doing fair practice. Now let's come to Japan. Japan ने क्या किया? एवरेज कॉस्ट 69.4, प्राइस चार्ज इन दुबई 70.6. ओके फाइन, बट जापान मार्केट में जो प्राइस चार्ज है वो 71.1 है और दुबई में आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हो दैट इज 70.6. सो यू आर चार्जिंग अ प्राइस in the export market which is lower than the price charge in the domestic market. Hence Japan is engaged in anti-competitive act. और चाइना की अगर मैं बात करूं, एवरेज कॉस्ट इज 70.9, प्राइस पर यूनिट फॉर डोमेस्टिक सेल्स इज 70.9, price charge in Dubai is 70.6 which is even lower than the average cost. Hence China is also engaged in anti-competitive practices. तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि सिंस ये एवरेज कॉस्ट से कम पे सेल कर रहे हैं तो एंटी कॉम्पिटिटिव एक्ट है और ये सिंस डोमेस्टिक प्राइस से कम पे सेल कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो एन एंटी कॉम्पिटिटिव एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ सच प्राइसिंग ऑन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ऑफ मोबाइल फोन. बेचारे दुबई वाले मोबाइल फोन प्रोड्यूसर्स का क्या होगा? दे विल लूज कॉम्पिटिटिवनेस because जो exported माल आ रहा है that is at such a lower price, hence they will lose competitiveness. So what will the Dubai government do? They would impose anti-dumping duty in order to encourage the domestic producers. Okay. अगला सवाल है explain the significance of public debt as an instrument of fiscal policy. Public debt मतलब क्या हुआ? The government is borrowing from where? Either from internally, that is from the public of the economy, or from externally, that is outside the country. Now when they are borrowing internally from the economy, from the public, they are influencing the aggregate demand. So if the government is borrowing funds, public debt, that means borrowing funds from the public, they are reducing the money supply in the economy, hence aggregate demand is curtailed. Similarly, if they are repaying the public debt, money supply is being increased and also what happens in turn? The aggregate demand would increase. Money अगर हाथ में ज़्यादा है, aggregate demand would increase, right? So it is used as a policy instrument to influence the aggregate demand. अगला सवाल है describe the benefits and costs of FDI to the host country. So here we have to talk about the advantages, disadvantages of FDI. Very simple. अगर FDI आएगा तो कंपटीशन इंक्रीज होगा होस्ट कंट्री के अंदर. बेनिफिट्स बात कर रही हूँ मैं. Competition would increase, job opportunities will increase, okay, then better technology would come. जो investment है, domestic investment, if it is not enough, we are getting more funds from the foreign countries, foreign capital inflow is taking place, hence infrastructural developments would be made. If I talk of the costs, that means the disadvantages.
अगर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज आ रही हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज माइट डिक्रीज. इट माइट सो हैपन दैट good jobs or jobs which require brain are reserved for the foreign country, and only non-skilled or unskilled or very low-skilled jobs are being given to the host country laborers. In that case, the development of the youth would not be as much as required. इस तरह से आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेज डिस्कस करने काफ़ी सारे बुक के अंदर दिए हुए हैं. 3 मार्क्स का है तो यू राइट एटलीस्ट 3 to 4 advantages, 3 to 4 disadvantages. Okay. Next question is explain the concept of private cost. So this is a question from your market failure chapter. Private cost क्या होता है? Private cost is the direct cost of production of goods and services for the producer. That means the direct cost of the factors of production. For example, private cost of a mobile phone would include the cost of material, labor, ठीक है, interest cost if any. If there's any land for that, any kind of overheads, ठीक है, तो वो आपके direct cost में आ गए, यानी कि private cost का part है. Now, last question is what do you mean by reserve money? So reserve money is nothing but your high powered money. इसको base money भी कहते हैं. Reserve money includes what? It includes all the currency in circulation, the cash reserves of the banks. That means the reserves with the RBI, the cash reserve which is kept with the RBI and other deposits with the RBI. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम high powered money और base money भी कहते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा ये पेपर डिस्कस कर लिया. मैं इसका जो फाइल है, ठीक है, ये जो फाइल है ये मैं अटैच कर दूंगी इस वीडियो के साथ में, सो दैट यू कैन डाउनलोड इट फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. डू वॉच द November 20 पेपर रिव्यू वीडियो ऑल्सो, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो हाउ डिड यू लाइक द वीडियो. अपने दोस्तों के साथ भी इससे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेन बेनिफिट फ्रॉम द सेम. That's all guys, see you in the next video. All the best until then. Stay healthy and study well for your examinations. All the best.